The Supreme Court of India has barred civil courts across the country from taking any action on suits challenging the ownership or title of places of worship. A bench led by Chief Justice of India Sanjeev Khanna stated, and I quote, "No fresh suits shall be registered and no effective orders, including surveys, can be passed in pending cases until the next hearing." This decision impacts high-profile disputes like the Gyanvapi case in Varanasi, the Krishna Janmabhoomi temple dispute in Mathura, and at least 10 other ongoing cases. पिछले कई सालों में टेम्परेरीली सही, यानी कि कुछ समय के लिए ही सही, संविधान की गरिमा को, जो संविधान चाहता है देश की सुप्रीम कोर्ट से, उसको रखा है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये फैसला शायद हमारे पक्ष में नजर आ रहा है, इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं। हमारे पक्ष में ये इसलिए नजर आ रहा है कि गैर कानूनी तरीके से हर मस्जिद को, हजारों मस्जिदों को मंदिर बताने की कोशिश हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमारे पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन कोर्ट ने जो रीजन दिया है इसका, वो ये दिया है कि जब एक किसी इशू के बारे में आप स्वयं ही चैलेंज कर रहे हो कि ये इशू जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, तो निचली अदालतें उस इशू पे कैसे डिसीजन कोई दे सकती हैं। तो इस वजह से जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन नहीं होता, हमें नीचे के सारे काम, सर्वे का काम, जो इंटरिम ऑर्डर्स भी पास नहीं करेगा कोई, और नया कोई केस भी डाल नहीं पाएगा जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। अब नया केस डालने से रोक के बारे में भी मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन मुझे करना चाहिए, और वो क्लैरिफिकेशन ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये मनाही करता है पूरी तरीके से कि कोई भी किसी केस में भी इन केसेस में अदालत में जा ही नहीं सकता कोई। The bench was hearing multiple petitions challenging the constitutional validity of the Places of Worship Act 1991. This law maintains that all places of worship except Ayodhya must retain the status they held on the 15th of August 1947. It was enacted during the Ram Temple movement to ensure peace and secularism. The petitioners argue that the act violates the right to judicial review, which is a fundamental feature of the Constitution as established in the Minerva Mills case. Critics also say that the act infringes on the principles of secularism and demand its repeal. The Supreme Court has directed the central government to file its reply within 4 weeks. Despite being issued notice 3 years ago, the government has not yet clarified its stance on the act. Meanwhile, Hindu groups have long opposed the act seeking its repeal. However, groups like the Jamaat Ulema-e-Hind have raised concerns, saying, even debating, that the act could alarm the Muslim community and threaten India's secular fabric. The management committee of the Gyanvapi mosque in Varanasi has warned of drastic consequences if these petitions succeed. They highlighted a recent incident in Sambal, Uttar Pradesh, where a survey led to communal tension. The Supreme Court will now deliberate on this highly sensitive matter.